चलिए, all right, guys, am I audible, visible? Do let me know. Hi everyone, welcome. क्या मैं दिख रहा हूँ? Can you see me? Do share. चलिए जी, आ रहे हैं आपके कमेंट्स. ऑल राइट, फाइनली यस. सो हाय एवरीवन, वेलकम. सभी का स्वागत है. Have been trying to go live since a long time now. आधे घंटे की मशक्कत मेहनत के बाद finally we have successfully resolved to some extent. हमने जो भी टेक्निकल ग्लिचेस थे वो सब सॉल्व कर दिए हैं. अभी भी मैं आपको थोड़ा सा ऐसा जगमगा रहा हूँ थोड़ा सा फ्लेकी सा दिख रहा हूँ, बट दैट इज सम टेक्निकल ग्लिच इज देयर, बट एनी विच वेज वो जो है जल्दी ही दूर हो जाएगा. ठीक है, तो स्वागत है जी आप सबका. वेलकम एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम. चलिए जी, बहुत स्वागत आपका. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन था. सो फॉर दिस सेशन वी कुड नॉट पोस्टपोन इट बिकॉज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है. एग्जाम आपके सर पे है तो वही टाइम हमारे पास कम है. सो हेंस कुछ भी कराकर हमने ये सेशन आपके लिए जरूर लेकर आ गए हैं. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस. लास्ट लैप टू AILET 2022 GK marathon current affairs for the month of April we'll be covering here today. Lots of things are to be covered here in this session. क्या चीजें हम आज कवर करेंगे, चलिए देखते हैं फटाफट. सबसे पहले guys, today we'll be covering, first of all we'll be talking about national news. So lots of news which is important with regards to our nation. We'll be covering that. We will also be covering international news, science, tech, defense related news as well, along with sports, of course, followed by awards, appointments, economic and financial awareness, and towards the end we'll be having a quiz of sorts, current affair, multiple choice questions we'll be discussing. Right, तो चलिए फटाफट से let's quickly begin. Let's go. तो गाइस स्टार्ट करते हैं नेशनल न्यूज से. So when we're talking about national news, the first news is this: Tata Power Renewable Commission, you can see here, commissions 300 megawatt solar plant in Gujarat. Now what are the kind of questions that can be asked here? They can definitely ask us about the venue, right? So definitely one must be aware that the venue is, you can see here, Dholera in Gujarat. Dholera in Gujarat is the venue, and also the office bearers of Tata will also be important. So first quickly write Dholera, right? ये जल्दी से लिख लीजिए आप. Now this project will generate 774 million units on an annual basis. So बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ऑफ कोर्स. एंड सोलर पावर, इंडिया चाह रहा है कि भाई वर्ल्ड में सबसे बड़ी सोलर पावर बन जाए हम. और आर कमिटमेंट्स वी ऑल नो, 2070 नेट जीरो कार्बन एमिशंस, 2040 तक सब्सटैंशियली कम कर लें, 2030 तक भी हम सब्सटैंशियली कम कर लें. तो ये सब चीजों के लिए ये सारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है. राइट, चलिए अली प्लीज थोड़ा सा, हाँ ऐसे ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें कवर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. चलिए, ऑलराइट, डन है सर, लिख लिया. यस, गुजरात, एब्सोल्युटली गुजरात इज द करेक्ट आंसर. एंड डॉक्टर प्रवीर सिन्हा इज द CEO and the managing director of Tata Power. Please write this down as well. जल्दी से ये लिख दीजिए. CEO and managing director is Dr. Praveen Sinha. ठीक है जी, डॉक्टर प्रवीर सिन्हा. चलिए, now moving on, भूपेंद्र यादव, he is the आपको पता है एनवायरमेंट, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हैज लॉन्च्ड द एनवायरमेंट अवेयरनेस mascot called as Prakriti basically is a word which basically perfectly describes nature, right? So that is how you can basically remember it. काफी आसान है याद रखना. Aim क्या है इसका? You can see here to spread mass awareness of small changes in lifestyle can bring better environment sustainability, right? तो ये देख सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे मैस्कट के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन फटाफट से लिख सकते हो. चलिए जी, सर हल्की तरह ग्रीन दिख रहे हो आप, कोई बात नहीं यार, आज मुझे मत देखो, कंटेंट को देखो यार, कंटेंट को. ठीक है, चलिए आज आपके लिए मतलब इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे फिर भी हम लाइव आए. क्यों? क्योंकि
बिकॉज ऑफ द टाइम, राइट? तो कोई चक्कर नहीं है यार, ग्रीन दिख रहे हैं, रेड दिख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता यार, मुझे मत देखो, कंटेंट देखिए आप, ठीक है जी। चलिए, डन। So to basically, increase the awareness about plastic management here in the country, ये आपको याद रखना है. India has obviously, all of you know, to ban all sorts of hazardous plastics, right? Single use plastics को हम बैन करना चाह रहे हैं 2022 तक. अब देखते हैं इस endeavor में हम कितना सक्सेसफुल होते हैं. जब हम इस तरह की न्यूज कर रहे हैं, when we are doing this kind of a news, your job, when you are studying it, when you are revising it, your job is to recall everything that is associated with it, right? So for example, when you read this news, you are supposed to remember the mission that the Delhi government has launched to clean Yamuna River, right? Yamuna River को environment related क्या क्या important चीजें हैं, क्या क्या आपके दिमाग में आ रही है, जल्दी से चैट में लिख के बताइएगा, right? What are the important environment related news that you can recollect right now? वो आप जल्दी से हमारे साथ शेयर कीजिए. Very important. This is how you basically revise things, right? चलिए, all right, let's go next. Meanwhile, till the time you share your answers, the next news: India's first regional rapid transit system to be handed over to NCRTC, that is the National Capital Region Transport Corporation. तो आप यहाँ देख सकते हैं ये regional rapid transit system, इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ये जो है has been handed over to NCRTC at you can see here the Savli plan in Gujarat. ठीक है जी. अब ये जब ट्रेन बन जाएगी, देख सकते हैं आप, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ये बनेगा. Whenever it is ready, the trains will be running at a speed of 180 kilometers per hour, which is remarkable increase if we look at the current infrastructure. ठीक है, तो चलिए जी, नेक्स्ट वन इसमें देख लीजिएगा. इट विल बी ब्रॉट टू दुहाई डिपो इन उत्तर प्रदेश. इंप्लीमेंटिंग एजेंसी विल बी, ये देख सकते हैं आप, ऑफ इंडियाज फर्स्ट RRTC कॉरिडोर विल बी NCRTC. चलिए, all right, next one, very good. Renewable energy farming, electric vehicle related news, very good. Carbon emissions, COP26, right? Sir, is this important for IPCET? Guys, this is actually important for all law entrance exams where current affairs is a subject, right? So this class will be important for every such thing. Now is what exactly is a GI tag? We all have discussed this numerous times. So GI tag basically is to protect the farmers or the people who gain out of a geographical area, geographical region. Say for example Nagpur's orange, right? So they have the GI tag. Nobody else apart from the people from Nagpur can sell oranges claiming them to be Nagpur ka santra or Nagpur oranges. So this is why, because to protect the farmers there in the region, right? To protect the geographical area and the people have exclusivity. So that is what is the idea of GI tag. It is an IPR, intellectual property right. So you can see here Kangra tea is likely to get European Union GI tag. Kangra tea received Indian geographical tag, geographical indication tag when? So you can write this down in the year 2005, right? 2005. तो ये लिख लीजिए फटाफट से. ठीक है जी. Kangra region, where is it located? So it is located there at Himachal Pradesh. Do write it. Let me know once done. Sir, my current affairs is zeros. Whether should I cover each and every month or now, beta, you don't, if you're preparing for the year 2022, you don't have time to go and do day wise or week wise current affairs. Now because of paucity of time, now is the time that you should focus on monthly current affairs because of paucity of time. All right, let's go next. Atal Innovation Mission has been extended till the year 2023. Guys, the Union Cabinet headed by our Prime Minister has approved the extension of the Atal Innovation Mission till the year 2023. This can definitely be asked, so you can write it down. What is the aim of this? You can see here, to develop
10,000 Atal tinkering labs, 101 incubation centers set up, 50 Atal community innovation centers, and sponsored 200 entrepreneurs through the Atal India challenges. Now guys, when we're talking about this initiative, this is to make sure that people here in India who want to be entrepreneurs or who are existing entrepreneurs, they basically get a platform to get all the access to technology or any such other infrastructural needs that is lacking currently. So through this initiative, lots of entrepreneurs are to be benefited. All right, chaliye. Now when you're talking about this initiative, you can see here more than 2,000 crore rupees. So please write it down. Budget for this initiative is 2,000 crores and is set up under Niti Aayog. When you're talking about Niti Aayog, you all know the office bearers of Niti Aayog. Guys, quickly share this with me. When was Niti Aayog formed? When was it renamed from Planning Commission to Niti Aayog? कब हुआ जी ये change फेरबदल? जल्दी से बताइए. Which year? I'm asking. Let's go. Let's see how many of you give the correct answer. You can see Bhupendra Yadav ji is again in news in the month of April. The 20th NTCA meeting has been chaired by Union Minister Bhupendra Yadav. Now, this was in the Pakka Tiger Reserve in Arunachal Pradesh. When this sort of news basically comes into the picture, then you can definitely study a little about this tiger reserve. Where actually is it situated? What is the location? Is there any such other news that is important with respect to our exam which we are supposed to remember? That is to be researched as well. So just a basic research on the same is absolutely required. Chaliye. All right, you can see here this is the first ever NTCA meeting that was held outside the national capital. In March 2021, the air gun surrender abhiyan was started in Arunachal Pradesh. Do remember this? I'm sure lots of us, would have used air gun sometime or the other. बचपन में कभी ना कभी आप लोगों ने भी चलाई होगी, यूज की होगी. तो ये नहीं करना चाहिए. काफी दिक्कतें होती हैं. जानवरों को शूट किया जाता है, उससे परेशान किया जाता है, बहुत सब कुछ होता है. तो उसके खिलाफ भी इनिशिएटिव चालू किया था. चलिए, पर वो तो पिछले साल की बात है. ऑलराइट, नेक्स्ट. Now you can see Made in India flight takes off from Dibrugarh in Assam to Pasighat. ये आपको याद रखना है. Very good. I can see lots of you have shared your answers. बहुत बढ़िया. 2015 सब लाइन से बोले रहे हैं. Very good. Well done. Absolutely correct. Good job. 2015 पक्की बात है. चलिए. Alright, कुछ लोगों ने भाई 2015 बोला है. चलिए, फर्स्ट एवर फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया 17 सीटर. HAL stands for, I'm sure everyone knows this, Hindustan Aeronautical Limited, Dornier DO 228. Now this name is important for us. Do remember this. HAL Dornier DO 228. Now this is the name of the flight. Flagged off from where to where? So you can write it down. Dibrugarh in Assam to Pasighat in Arunachal Pradesh. The center run, you can see here, Alliance Air signed an agreement with HAL. ये हम लिख चुके हैं ऊपर ही, तो अगेन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है आपको. But yes, this is the name. ठीक है जी. चलिए. Now, this will be nation's first commercial airline to operate an Indian-made aircraft. आज तक कभी भी commercial purposes के लिए कोई भी Indian-made aircraft यूज नहीं हुई है. आप सबने सुना होगा तेजस के बारे में. It's a combat aircraft, मतलब लड़ाई के लिए वो aircraft बनाई गई है. To combat, उस टाइम हमारे पास प्रेशर भी था. पाकिस्तान खुद की बना रहा था, तो हमें भी बनानी जरूरी थी. चाइना खुद की बनाता है, तो उसलिए हमने भी हमारी इंडिजिनस बनाई, पर वो combat aircraft है. Commercial aircraft, this is the first one. But आप देख सकते हैं size of the aircraft is comparatively small. Chaliye, but nonetheless it's a start for sure. Next, Anurag Thakur inaugurates 40th Hunar Haat. ये देख सकते हैं आप. Union Minister for Information and Broadcasting and also Union Minister for Sports, Anurag Thakur has inaugurated the 40th edition of the Hunar Haat in the presence of another union minister. देख सकते हैं आप, Mukhtar Abbas Naqvi.
चलिए, द 40th हुनर हाट इज अ फीजिबल प्लेटफॉर्म, अभी देख सकते हैं आप 16 थ्रू 17 27 अप्रैल तक ये कंडक्ट हुआ इन द सिटी ऑफ मुंबई, इन द सिटी ऑफ मुंबई। चलिए ठीक है जी। चलिए, अब ये हुनर हाट का क्या मतलब है? हुनर का मतलब क्या है? हुनर बेसिकली मींस टैलेंट, राइट? तो टैलेंट को जहां पे भी मतलब प्लेटफॉर्म मिले वहां पे फटाफट से वो ग्रो कर सकता है। तो यही है, उद्देश्य यही है कि हुनर का क्या मतलब हो गया, आपका जो टैलेंट है उसको भाई जल्दी से जल्दी आप प्रमोट करें। काफी सारे इनिशिएटिव्स इस तरह से लिए गए हैं। अगर हम याद करें अभी एयरपोर्ट पे ही, चलिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने रिसेंटली, राइट, इन a couple of months back, AAI basically started an initiative where they said that they will dedicate 100 to 200 square feet of area for artisans, skilled artisans, right? What is the name of this initiative, right? This is my question. Do share in the chat and in the comments. देखते हैं how many of you are able to answer this. चलिए, meanwhile, do write down Tejas. Now this is Tejas is a skilling program which has been launched by the government of India. Under this initiative, India will send skilled manpower to UAE. UAE actually requires lots of labor. People there in UAE, आपने देखा होगा जितने भी हमारे कोई भी स्काई स्क्रैपर्स हैं, उन सबको बनाने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, ऑल दीज कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, पीपल फ्रॉम हियर दे आर कंपैरेटिवली चीप, राइट? तो चीप लेबर वहां से जाता है यूएई में और वहां जाके ये स्काई स्क्रैपर्स बनाते हैं, राइट? सो दे आर इन अर्जेंट नीड ऑफ प्लम्बर्स, for carpenters, for electricians, and for mason worker, etc. All those people will be trained and they will be sent to UAE to continue building UAE. Wonder ये सब चीजें फटाफट से हमारे यहाँ कब होगी? खैर, anyways, BRO, you can see here the Border Roads Organization is to build world's highest tunnel at Shinku-La Pass. So please write it down, the Shinku-La Pass. The question can be asked in the exam. It connects which states or which UTs? तो यहाँ देख सकते हो आप, हिमाचल प्रदेश to Ladakh. Please write it down. And it is the world's highest tunnel, hence this becomes very, very important for us. Very important, so do write it down as well. And the height 16,580 feet. चलिए जी, very good. अवसर, यशस्वी, नवनीत, नव्या, well done, well done. अभिषेक, अमान, शोले, इस्पिता, पिंकी, well done. जिक्र, yes, बिल्कुल सही जवाब. It is अवसर. अवसर is absolutely the correct answer. शाबाश, well done. चलिए जी. All right, let's go. Next, here we go. ये इसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में ये भी लिख दीजिएगा. The center has already made project योजक of BRO to execute this ambitious project. So do write this down as well under the project Yojak. Now, presently one must travel. अब ये you don't have to write this, right? कि अभी आज की डेट में कहां से कहां ट्रैवल करना पड़ता है, ये नहीं है कि भाई यहां से लेफ्ट लो और वहां से राइट लो. But what is important is BRO's Director General, Lieutenant General Rajiv Chaudhary. So do write it down as well, right? So if there is a passage on the same as well, तो भी आपको important है. If individual questions are asked, still this is important because it is related to current affairs. All right. The next one, India's first pure hydrogen plant has been commissioned in Jorhat. So you can write it down in Assam. Jorhat, 10 kgs per day clean pure hydrogen will be produced here. India is working hard to, or striving hard to achieve 20 kg per day in the coming months, right? So this is what our target is. So you can definitely write it down. What kind of question can be asked? That how much is the production? Secondly, what is the location? So Jorhat in Assam. So do write it down. All right. चलिए, सर एक बात समझ नहीं आती, मुझे ऑप्शंस याद नहीं रहता, लेकिन जब ऑप्शन के साथ आते हैं तब मैं मार्क कर देता हूं. सो ये आप इसलिए करते हो बेटा बिकॉज सबकॉन्शियस मेमोरी हेल्प्स,
हेल्प्स यू, राइट। तो ये होता है, सबके साथ होता है। जब आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स को याद रखना लंबे समय के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट, और जैसे कि भाई पूछा और तुरंत बता दिया, सब चीजें नहीं बता पाओगे क्योंकि यू विल बी रीडिंग थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए जितनी ज्यादा बार रिपीटिशन होगा, जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करेंगे चीजों को, जितनी ज्यादा आपकी आंखों के सामने से चीजें जाएगी, उतना ज्यादा चांस है कि आप जैसे ही ऑप्शन करेक्ट देखोगे आपके सामने, आपको लगेगा ये इसका आंसर तो जोरहट है, अपने आप वही मार्क कर दोगे आप। सो योर सबकॉन्शियस मेमोरी विल कम टू योर एड, राइट। इसीलिए आपकी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग पे हमने इनिशियली बहुत ज्यादा फोकस किया था, राइट। चलिए, नाउ आप देख सकते हो, आप 10 kg से 30 kg से प्रोड्यूस करना चाहते हैं, यूज ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। Next, Pali becomes India's first carbon neutral panchayat. Now you can write it down. It's located in Jammu. Pali village has become India's first carbon neutral panchayat. Now these are the kind of questions that AILET actually asks very frequently. AILET, MHCET and all such other exams, right? These are frequently asked questions. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा। पाली विलेज इन संबा डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट लिखा हुआ आ गया, ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। सो प्लीज राइट इट डाउन इमीडिएटली। टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, फुल्ली पावर्ड बाय solar energy. Now this project 500 kilowatt solar plant will help, you can see here, villages as well. Villagers contributed to the formal construction of this as well. It took them 3 weeks to construct this entire thing. The 1500 solar panels were installed in a total area of 6400 square meters to provide clean electricity to 340 houses under the Gram, you can write here, Gram Urja Swaraj program. The Gram Urja Swaraj program. All right. Jammu and Kashmir governor is Manoj Sinha. We are all aware of the same. All right. Let's go. Next, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the 7th edition of the Raisina dialogue. देख सकते हैं आप in New Delhi. So you can write here. All right. So the chief guest was the president of European Commission, Ursula von der Leyen. So do write this as well. The chief guest, the name of the chief guest is important for us as well. Several former prime ministers of different countries and other officials will also participate in this event. What is the theme? Now this will definitely be asked for you. Everyone has to mandatorily note this down. Very important this is. So do write this down, right? Jaldi se likh daliye. These are 6 broad thematic pillars of the dialogue, which include rethinking democracy and of multilateralism, water causes, and achieving green transitions. All right. Now, about Raisina dialogue, you can write here, a multilateral conference committed to address the challenges faced by global community. It discusses you can see a cooperation on wide ranges of important international matters or policy discussions. It involves heads of the states, cabinet ministers from various countries, local government officials, members of academic fraternity, plus the members of the media as well. सब लोग मिलके basically इसमें involve होते हैं, फिर discuss करते हैं important international policies, right? Now, hosted by Observer Research Foundation in collaboration with Ministry of External Affairs, Government of India. I'm sure all of you are aware who is the Union Cabinet Minister here. Chaliye. The first edition was held in the year 2016, right? Observer Research Foundation is basically a think tank located in New Delhi. All right, next, India to host 21st World Conference of Accountants 2022. So do write this down as well. India is all set to host this, and where? In Mumbai, right? ठीक है, तो लिख लीजिएगा मुंबई में होस्ट किया जा रहा है. Quickly write this down. सर, यूपी से कश्मीर पढ़ाई करने जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? अगर आपका एनएलयू में हो गया तो बढ़िया है, चले जाना, ठीक है. आने दो वहां पे भी. चलिए, डन है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट वायलेट, बिल्कुल सही कहा आपने. चलिए, एस जयशंकर, नवनीत, वेल डन, एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए. All right, so this event you can see here was held in Mumbai.
ठीक है जी, मुंबई में हुआ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। और व्हाट वाज द थीम? सो यू कैन राइट दिस, वेन्यू मुंबई एंड द थीम बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और ये भी लिख दीजिएगा, द ICAI प्रेसिडेंट इज देवाशीष मित्रा, देवाशीष मित्रा। All right, let's now move on to international news. Again, India, Australia economic cooperation and trade agreements. Now, on the 2nd of April, India signed an economic cooperation agreement with Australia, where you can see here, under which Canberra, that is Australia, would provide duty-free access to 95% of Indian goods such as textiles, leather, jewelry, and sports products. So if someone basically creates their own cricket bat here and they want to sell it in Australia, the duty basically 95% is duty free. So only 5% or tax will be paid. So बहुत ही अच्छी deal है economic cooperation की, and will definitely benefit people who are dealing in all these industries: textiles, leather, jewelry, and sports. It was inked by Piyush Goyal, Commerce Minister, and Australian Minister for Trade as well, जिनका नाम है Dan Tehan, in a virtual ceremony. ठीक है जी. Here you can see here, according to the government estimates, the trade will be between 27 billion to 45 billion dollars in the next 5 years. So definitely will benefit both the countries, of course. Right. At present, Australia is the 17th largest trading partner of India. We are, working on making it, hub for all these industries, especially for India, because हमारा जो trade deficit है बहुत ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह की deals ज्यादा से ज्यादा कर सके. Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, and India gas pipeline project. Now, President Ram Nath Kovind visited Turkmenistan, discussed several outstanding issues, including the strengthening bilateral relations with Turkmenistan. वहाँ के जो president हैं, Sedar, you can write here, Sedar Berdimuhamedov. Right, तो इनके साथ बेसिकली डिस्कस किया, एंड इंडिया रीस्टार्टेड द एफर्ट्स टू रिवाइव द डिलेड, मतलब पहले से ये बेसिकली डिसाइड किया था कि ऐसा करेंगे, बट किसी ना किसी कारण से इट वाज बीइंग पुश्ड. सो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, this was basically discussed by our president during his visit. Now about this, you can see here, Turkmenistan is the house for, you can say, gas reserve, 6th largest in the world. Lots of gas reserves are available there. Its main importer is China today, which imports 35 billion क्यूबिक आप देख सकते हो मीटर्स ऑफ रिजर्व जो है उनके एनुअली. राइट, आज की डेट में आप देख सकते हो इंडिया भी चाहती है कि भाई हमें भी मिल जाए इस तरह से तुर्कमेनिस्तान से इंडिया आ जाए, बट वहां से आने के लिए वी विल रिक्वायर अदर कंट्रीज support as well, hence the delay. You can understand the 1814 kilometers partially constructed Tapi pipeline, if and when will be complete, jab bhi complete hoti hai, but it will require support from Afghanistan as well as Pakistan. कितना easy है कितना difficult है आप सभी को पता है वो. right, चलिए अब ये कहां से कहां आएगा तो आप ये देख सकते हो. idea is to get it from, you please write the name of the places, Galkanish in Turkmenistan, प्रोनाउंस जो है हो सकता है गलत कर रहा हूं बट कोई बात नहीं, फजिलिका इन इंडिया. राइट, तो यहां से गालकनिश तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पे फजिलिका इन इंडिया, यहां तक लाने का ये प्रोग्राम है. चलिए बढ़ते आगे. वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, वी हैव डिस्कस दिस. राइट, सो यू कैन राइट इट डाउन, ऑन यांगजे रिवर. इट इज पावर्ड by 7,500 किलोवाट आवर बैटरी, मतलब बहुत ही मरीन बैटरी. अब ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय चाइना ऑफ कोर्स. जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइना की, तो चाइना ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया, भाई पहला इलेक्ट्रिक क्रूज शिप बना दिया है, और मैसिव बैटरी है यहाँ पे जो कि वो यूज भी कर रहे हैं. जब इस शिप की बात कर रहे हो देख सकते हो आप, इन अ सिंगल चार्ज इट कैन ट्रैवल फॉर अराउंड 100 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, सेविंग अराउंड 530 मेट्रिक टन्स ऑफ फ्यूल.
राइट, तो ये आप जरूर याद रखिएगा. नेक्स्ट, एज वी ऑल आर अवेयर, रशिया हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. Russia basically has been suspended from lots of organizations including UNHRC. All right, so the resolution titled suspension of the rights of membership of Russian Federation, आप देख सकते हो, was adopted with 93 votes in favor, 24 in against and 58 absentees, in which India was included. इंडिया ने एक भी जगह पे रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया. राइट, इंडिया ऑलवेज ईदर रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, या फिर इंडिया ने बोला कि भाई हम रशिया के को बैन करो, रशिया को हटा दो, इस तरह का हमने कोई भी बयान नहीं दिया. बदले में हमें क्या मिला? सस्ता तेल मिल गया. ठीक है, चलिए. ऑलराइट, मूविंग ऑन. Russia, China, Cuba, North Korea, Iran, Syria, Vietnam were among those who voted against. तो यहाँ पे देख सकते हो, Russia became the second country after Libya to get suspended from the human rights body. ये आप याद रखिएगा. रशिया के अलावा लीबिया हो चुका था, बट लीबिया 2011 में. About UNHRC, so you know that UNHRC basically consists of 47 member states elected directly and individually by secret ballot. It is a United Nations body. Aim is to promote human rights across the globe, right? And the headquarter located in Geneva, Switzerland, and the president is Federico Villegas from Argentina, right? ये तो अब सबको याद हो ही गया होगा, इतनी बार हमने डिस्कस कर लिया है. चलिए जी, डन है. चलिए, ऑलराइट, लेट्स गो. नेक्स्ट, international news. Further moving on, coalition for disaster resilient infrastructure. Now Madagascar, we all know, Africa के southern part में आपको ये मिल जाएगा, southern southeastern part. Madagascar island nation has joined the coalition for disaster resilient infrastructure. It is a nation where there are lots of frequent disasters जो कि मैडागास्कर में देखने को मिलते हैं. इंडिया ऑलवेज कम्स इन सपोर्ट ऑफ दिस नेशन. कई बार बहुत सारा रिलीफ हमने इनको भेजा है. इट हैज बिकम द 30th country to join this partnership. It was launched by our Prime Minister Narendra Modi during his speech at the UN Climate Action Summit in the year 2019. Disaster resilient infrastructure. Today 30 members in total there are, consisting of 23 national governments and 7 organizations other than international governments. ठीक है, या फिर मतलब countries के अलावा 7 अलग organizations हैं which are also a member of the disaster resilient infrastructure. It is the second major coalition which has been launched by India apart from the International Solar Alliance, as we all are aware, right? ISA के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस अलायंस टू डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल. आपको पता है जी, ऑकुस पार्टनरशिप जो है उसमें यूएस हैज शेयर्ड इट्स टेक्नोलॉजी with earlier with UK, now with Australia as well. In this partnership they are basically sharing technology with them, right? कौन सी टेक्नोलॉजी? मरीन टेक्नोलॉजी. तो ये सब चीजें कर रहे हैं टू मेक श्योर दैट US has its allies who are strong enough to tackle the threat that is caused by China, especially in the South China Sea, right? So that is what is the intent. All right, let's go. बढ़ते हैं आगे. चलिए जी. US, Russia and China have all looked to further develop hypersonic missiles. अभी हम सबको पता है Zircon मिसाइल रशिया ने टेस्ट फायर किया था, तो उसी तरह से अब ये सब मिलकर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं. चलिए जी. अब ऑस्ट्रेलिया हम डिस्कस कर ही चुके हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी ले रहा है यूके यूएस की मदद से. Next, first black woman US Supreme Court judge. A very important question with respect to our exam. Please write the name. You can write this, Ketanji Brown Jackson. Please write this down. Very, very important. First black woman in US Supreme Court. First, absolutely super duper important. Now you can see kitne vote mile is not important. Just write that the name of the person is Ketanji Brown Jackson. She is the second youngest member of the court.
after Judge Barrett. Again, this will not be asked. Kamala Harris is also the first black woman president. So two important things to be remembered. Kamala Harris, of course, first black woman vice president, and the judge as well, right? Ketanji Brown Jackson. So do remember this. चलिए नाम भी इनका ऐसा है कि भूलोगे नहीं यार, I'm sure. Kamala Harris is defense advisor again, and कह सकते हो in Indian origin, American, right? So Indian American Navy veteran Shanti Sethi has been appointed as a defense advisor of the US Vice President Kamala Harris. So Shanti Sethi is the name. ये याद रखिएगा. Yeah, she has basically served for the US armed forces for a long time now. Next, Shehbaz Sharif has been elected as the new Pakistan Prime Minister, facing severe economic crisis in Pakistan. Not a wise time to be Prime Minister, right? The global recession is there, but they were successful in toppling the Imran Khan-led government. The Tehreek-e-Insaf party basically boycotted the oath ceremony and all the other things, and they are basically currently protesting actively, right? One thing is to be noted that no Pakistani Prime Minister has completed their 5-year tenure till date. Chaliye. Now is the time to cover state news. Let's go. State news. We'll increase our speed as well now because lots of things are to be covered today along with lots of questions. So Hobby Hub scheme has been launched by Delhi government. Please write this down. This is basically to promote hobby of individuals, people who are interested in arts and crafts or some sports. They will basically have time now which they can dedicate in the school after the school hours, right? After the school hours, the Delhi government has set up hobby hubs for people who are there studying in government schools in Delhi for their extracurricular activities. Aim, obviously, we all know, to promote, their overall, you can say, overall personality, right? Because obviously, extracurricular activities increase your likability in terms of even interviews in the future, or even your personality as a whole. You learn lots of things from sports, from arts, from crafts, so dance, etc. कितनी सब चीजें सीखते हैं हम इनसे. तो that is the main aim. Alright, so categories of activities we all can see here: dance, music, technical, literary, yoga, garment work, photography, radio jockey. All these things will be promoted over there. Delhi's education minister, we all are aware, Manish Sisodia. Chief minister is Arvind Kejriwal. The governor is Anil Baijal, right? So do remember all the three names as well. Next, Andhra Pradesh has set up She Auto stands for women's safety. Now, the Chittoor police here, you can see in Andhra Pradesh, has set up She Auto stands in Tirupati. Autos will be solely run by female drivers to ensure better safety for female travelers. 3 She Auto stands have been set up in the RTC bus stand, Mahila University, as well as the Ruia Hospital, right? Aim, of course, is to give better safety to women and girls. Capital of Andhra Pradesh is Amravati. Governor Biswa Bhushan Harichandan. Chief Minister is Y.S. Jagan Mohan Reddy. All right, the current Chief Justice of India, N.V. Ramana, was there as the Chief Justice of Andhra Pradesh before going to the Supreme Court. World Heritage Site tentative list, you can see here Sri Veerbhadra Temple is there in it. Andhra Pradesh CM has inaugurated 13 new districts, so the grand total now is 26. Now this question is again very important one, definitely worth coming in your exam. Very, very important, guys. Definitely do not miss it. Super duper important with respect to our exams, right? So do write it. Chaliye ji. Total number of districts is now 26. 13 new districts have been added. Total 26. All right. Chaliye ji. Now, aim is to basically have better administration. More the people, less the territory, it is easier to manage. As simple as that. All right. All right. Here is the name of all the new districts. You can basically take a look here and you can write it down. You can take a screenshot right now and write it down at a later stage. Chaliye ji.
Each district in Andhra Pradesh had an average 38.15 lakh residents. So to make sure that the average of people per district is substantially reduced, this initiative was taken. All right, next, Karnataka sets up a cooperative bank for the dairy industry. So Karnataka has set up the Nandini Sheer. You can please write it down. Set up Nandini Sheer Samriddhi Cooperative Bank. Now, what will this bank do? This will provide financial assistance to people who are indulged in the dairy industry, right? People who are indulged in milk processing, cheese, milk, paneer, any such thing, cottage cheese, etc. Anything. Union Minister for Home and Cooperation Amit Shah released the logo of the cooperative bank. The capital, initial capital was roughly around 360 crores. All right, chaliye. The name of the bank is of course very important. Karnataka CM is B. Bommai, Governor Thawarchand Gehlot. Both of them are important, worth remembering. Now, next, Tamil Nadu CM has announced a breakfast scheme for primary school students. A very important one, though, this should be followed across the nation, right? I'm sure all of you would be agreeing as well. चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे. तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने अनाउंस किया that all government primary school students from the class 1st to 5th will be provided nutritious breakfast on all working days, right? ऐसा नहीं संडे को भी पहुंच गए कि कहाँ है मेरा नाश्ता, right? Only on the days where school is actually open. Tamil Nadu is set to become the first state to offer such breakfast facility along with the midday meals that they are currently offering. This includes the launch of integrated urban health centers within the corporation and municipal limits. ठीक है जी, चलिए. Earlier, he also announced schools with modern facilities will be established. So people are now emphasizing on education, which is absolutely a welcome move, right? तो आप यहाँ देख सकते हो. ठीक है जी, चलिए. Next one, Madhya Pradesh Champion of Change Award 2021. You can write this down. Governor Mangubhai Patel honored Chief Minister Shivraj Singh Chauhan with the Champions of Change Award. Do write this down. किसको मिला, क्यों मिला, लिख लीजिए फटाफट से. Very important. Now, CM Shivraj Singh Chauhan said that the state had become proud by honoring the talents who brought laurels to different areas of the society. And who was this award given to? आप देख सकते हो, actress Divyanka Tripathi honored with the Madhya Pradesh Champion of Change Award 2021 for a phenomenal work as an artist. आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, दिव्यांका त्रिपाठी का. दिव्यांका त्रिपाठी is a popular actress in lots of TV shows, TV serials. Her name is popping कि भाई Big Boss में भी आएंगे इस बार. ये सब चल रहा है. I'm sure you guys are following this as well. Right? चलिए, डन है. अब ब्रेकफास्ट भी होगा, हम तो बड़े हो गए. चलिए, ऑलराइट, डन. चलिए, नाउ नेक्स्ट you can see other awardees include former governor of UP and Mizoram Dr. Aziz Qureshi, music performer Padma Vibhushan Tejan Bai, the mayor of Indore as well, Malini Lakshman Singh Gaur. All of them have been awarded as well. Next, Tamil Nadu has observed, you can see here, Ambedkar birth anniversary as Equality Day. We all know that this was announced last year as well. So Tamil Nadu Chief Minister M. K. Stalin has announced that the birth anniversary of Dr. Ambedkar would be observed as Equality Day from this year. Last year, the central government made some announcements. They will be celebrating the 14th April as what? जल्दी से बताइए. सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? 14 अप्रैल को किस नाम से सेलिब्रेट करेंगे? जल्दी से बताइए. अंबेडकर जयंती को किस नाम से सेलिब्रेट करेंगे जी? बर्थ एनिवर्सरी बताइए. बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल को किस नाम से करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? और यहाँ पे साथ में लिख दीजिएगा उसके साथ, तमिलनाडु ने इक्वालिटी डे, राइट, इक्वालिटी डे नाम से ऑब्जर्व किया जाएगा इसको फ्रॉम नाउ ऑन. चलिए, ठीक है जी. इससे पहले यू कैन सी पेरियार्स बर्थ एनिवर्सरी ऑन September 17, सोशल जस्टिस डे पहले से अनाउंस कर चुके थे. करंट गवर्नर इज RN रवि, कैपिटल इज ऑफ कोर्स चेन्नई. चलिए बताइए जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस नाम से ऑब्जर्व किया था
14th April, कनक, मुस्कान, नव्या, मानस, आराध्या, शोले, सब जने आंसर तो कर रहे हैं, पर एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, ठीक है जी, रिसर्च कीजिएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर has unveiled 108 feet tall statue of Lord Hanuman at Morbi in Gujarat. So please write it down. Gujarat on Hanuman Jayanti, 108 feet tall statue of Lord Hanuman was inaugurated in Morbi, Gujarat. ठीक है जी। नाउ द स्टैचू इज द सेकंड ऑफ द 4 स्टैचूज बीइंग सेट अप इन 4 डायरेक्शन अक्रॉस कंट्री। ये हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट इज बीइंग रन या बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यू कैन सी हियर हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट जो है, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली अक्रॉस द कंट्री देयर आर the aim is to establish 4 tall statues of Lord Hanuman across the country, right? 4 different places. चलिए, फर्स्ट स्टैचू इन दिस सीरीज कहां पे है जी? तो देख सकते हो आप शिमला में है जी, राइट। सेकंड देख सकते हैं आप यहां पे आ चुका है मोरबी, गुजरात, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर द जखू हिल्स, शिमला 2010 में पहला सेटअप किया गया था, और यहां पे सेकंड इज हियर इन मोरबी, गुजरात, ठीक है जी। इसके अलावा साउथ में रामेश्वरम में बनना भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए, also guys, we do remember this as well. 216 feet statue of Ramanujacharya was also inaugurated by Prime Minister Narendra Modi to promote equality. Where was this statue inaugurated? What is the venue of this? Jaldi se bataiye, venue here. Now this question can also be asked in the exam. One should be aware. Jaldi se share kijiye kya hai ji venue iska? Statue of equality. Jaldi se bataiye कहां पे है? आई एम श्योर यू गाइज रिमेंबर, वी डिस्कस दिस न्यूमरस टाइम्स एज वेल. डू शेयर इन द चैट. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट द करेक्ट आंसर. चलिए, meanwhile Nitin Gadkari has inaugurated 33 national highway projects in Raipur and Chhattisgarh. 33 national highway projects will cost in the tune of 9,240 crore rupees. ठीक है जी. These projects will ease the connectivity of Chhattisgarh with states like Odisha, Maharashtra, Madhya Pradesh, Jharkhand and Uttar Pradesh as well. चलिए, ऑलराइट, वेल डन. लाइन से सबने हैदराबाद कहा, वेरी गुड. हरिओम, अस्मिता, इप्सिता, आराध्या कहा, किंजा, मुस्कान, वेल डन, एब्सोल्युटली करेक्ट. शिखर, एब्सोल्युटली राइट, वेल डन, वेल डन, वेल डन. चलिए जी, नेक्स्ट, Churu and Bishnupur districts have been honored with PM Public Administration Awards. Now, Churu is a district in Rajasthan. बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पे, सर्दियों में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, गर्मियों में तो काफी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स है चूरू में, बट कुछ वहां पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा वहां पे अबंडेंस में है. खैर, एनीवेज, तो इस डिस्ट्रिक्ट को प्राइम मिनिस्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड दिया गया in Rajasthan, and Bishnupur in Manipur has also been awarded. So do remember this. Churu in Rajasthan and Bishnupur in Manipur, best performance in implementing of promotion, you can see here Khelo India scheme में promoting excellence in sports and wellness. इसके लिए ये award मिला गया इनको, ठीक है, sports and wellness को promote करने के लिए under the Khelo India scheme. चलिए जी, next, now science, tech and defense related news. Let's go. The Indian Air Force is celebrating 60 years of service of the Chetak helicopter. Has helped us in lots of we can say lots of combats, lots of battles. This has helped us achieve lots of laurels. आपने देखा है कि जो भी हमारी डिफेंस की सक्सेस है वो obviously it is contribution of all 3 armed forces, right? Be it Navy, be it Air Force, or be it the ground staff, right? So Indian Air Force has commemorated 60 years of the Chetak helicopter, right? You can write it down. The event was inaugurated by, of course, the Defense Minister of India, Rajnath Singh. Chetak helicopter was inducted in which year? So this can be asked. So the answer is 1962. Please write this down. Now this year is important for us. IAF Day is observed every year on the 8th of October, right? Every year. This can also be asked. A static question holds importance with respect to our exam. Chaliye. Chief of the Air Staff, we all are aware, Vivek Ram Chaudhary.
राइट, सो डू राइट दिस एज वेल, फटाफट से लिख दीजिए। डिफेंस बजट वाज द हाईएस्ट, अगर हम देखें पिछले साल से कंपेयर करें तो और ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट 1% इंक्रीज। 5.25 लाख करोड़ इज द टोटल डिफेंस बजट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा। चलिए, डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। सो प्लीज राइट द नेम ऑफ दिस। इसका ये जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये डीआरडीओ ने बेसिकली सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एट द आईटीआर, दैट इज द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन ओडिशा सक्सेसफुली। तो ये इन्होंने लॉन्च कर दिया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वन लाइनर, जस्ट क्विकली राइट डाउन द। चलिए, चलिए, मनीष पूछ रहा है सर क्लास कब खत्म होगी? बेटा जब सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, जब खत्म हो जाएगी, है ना? कमाल है। अब क्या, आपको इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है आपके लिए आज की डेट में, है ना? एग्जाम सर पे है, बेस्ट थिंग इज अटेंडिंग द क्लासेस, ठीक है? आपके लिए हर तरह से फायदा ही है, ठीक है? रिवीजन भी करोगे तो भी अच्छा है, अगर ये पढ़ चुके हो तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ा तो नई चीजें हैं, लिखते रहिएगा। चलिए, अब इसका चेयरमैन आप सभी को बताया, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। नेक्स्ट, चाइना सक्सेसफुली लॉन्च सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड द नेम इज गाउफन। ये आपको हम पहले भी लिखा चुके हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर एज वेल, ऑलरेडी अवेयर, राइट? तो ये लिख चुके हैं हम पहले भी, हमने कुछ ही टाइम पहले हमने डिस्कस भी किया है ये। दिस विल बिकम पार्ट ऑफ इट्स लैंड सी रेडार सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। इट विल ऑल्सो कैप्चर इमेजेस टू हेल्प चाइना सेफगार्ड इट्स मैरीटाइम राइट्स, राइट? सो इनिशियल आइडिया इज दैट ओनली, राइट? यही हम सब भी यही कहते हैं कि भाई ये चाइना जो है, ये क्यों कर रहा है चाइना ने? भाई दुनिया पे नजर रखने के लिए, साउथ चाइना सी में देखने के लिए कंट्रोल सब है, कैसा है, क्या है, और कितना इंटरवेंशन हो रहे हैं बाय अदर कंट्रीज। नेक्स्ट, इंडिया टेस्ट फायर्ड पिनाका मिसाइल सिस्टम सक्सेसफुली। द पिनाका रॉकेट सिस्टम हमने पोखरन पे, ये भाई जैसलमेर के पास एक जगह है जहां पे हम टेस्ट करते हैं, जहां पे हमने वो भी टेस्ट किया था हमारे न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पोखरन फायरिंग रेंज पे हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम को टेस्ट फायर किया। अ टोटल नंबर ऑफ 24 rocket systems have been fired for different ranges and weapons. Now this was basically developed by whom? The question can be asked. This is definitely worth coming in the exam. 5 stars here, very important, right? बिल्कुल याद रखने लायक है जी, very important this is. चलिए, the armament research and development establishment in Pune. चलिए जी, developed by whom? Developed by Armament Research and Development Establishment in Pune. It is supported by the High Energy Material Research Laboratory of the DRDO. चलिए जी, नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशंस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइट हेलीकॉप्टर को कमीशन कर दिया है वहां पे, मतलब द इंडियन कोस्ट गार्ड विल नाउ the people over there, our brave soldiers, our brave coast guards, they'll basically get access to these helicopters now in order to better protect our coasts. चलिए जी, ठीक है जी, तो ये देख सकते हो, इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ वीरेंद्र सिंह पठानिया. Do write the name as well, and do write the name of the helicopter as well, AILET Dhruv or the MK3 squadron. चलिए, डन है दोस्तों, हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको हम बेटर प्रोटेक्ट कर सकेंगे. ऑफ कोर्स इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. तो हमारे खुद ने, हमने इंडिजिनस, ये हमारा डेवलपमेंट है डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट. चलिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना फ्लाइट टेस्टेड सक्सेसफुली. नाउ गाइडेड मिसाइल क्या होती है दोस्तों? जो बेसिकली आपका पीछा नहीं छोड़ती, मतलब अगर आप लेफ्ट गए तो वो भी लेफ्ट जाएगी जी, राइट गए तो राइट जाएगी, वो एक बार टारगेट लॉक कर दिया तो वो डिस्ट्रॉय करके ही दम लेगी, ठीक है. दैट इज व्हाट इज अ गाइडेड मिसाइल. तो इंडिया का देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना. अब ये कहां पे किया? जैसा कि आप सबको पता है, पोखरन में. मैंने बताया आपको, सब ज्यादातर ये ऐसे मिसाइल टेस्ट वगैरह वही होते हैं. जैसलमेर के पास जगह है, पोखरन, राजस्थान, ठीक है. तो ये देख लीजिए आप, ठीक है. फायर एंड फॉरगेट क्लास विच इज डेवलप्ड बाय द
DL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी ऑफ द DRDO। ठीक है जी, चलिए। The missile was developed as an you can see here from an indigenously developed advanced light helicopter at a high altitude range. इसकी रेंज कितनी है? तो 7 किलोमीटर की रेंज है। 7 किलोमीटर इज द रेंज। नेक्स्ट इजराइल। अब ये तो आपको पता ही है, इजराइल के बारे में हम बहुत कुछ कर चुके हैं। जल्दी से मुझे बताइए फटाफट से, एटमॉस्फेयर के ऊपर एक टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं जी इजराइल। एटमॉस्फेयर के ऊपर उनका एक डिफेंस सिस्टम है, जहां से वो बैठे बैठे ड्रॉप करते हैं मिसाइल्स, या अब करेंगे सक्सेसफुली, टेस्ट फायर तो कर दिया है, तो अब वो वहां पे बैठे बैठे सक्सेसफुली जो है मॉनिटर कर पाएंगे एनीथिंग दैट गोज or rather comes into the Israel airspace that will be destroyed in the air, and the missiles will not be coming from the ground like जो हम पहले देखते थे आयरन डोम से आती थी, वो नहीं होगा। अब क्या होगा जी, ऊपर से आसमान से भी बारिश होगी और सारी जो भी आपकी एरियल जो भी डिवाइसेस आ रही हैं इजराइल पे, वो सब डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, राइट। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है एरो, right? The name of the technology is Arrow. Very good, well done, Mayur, Shikhar. सी डोम बेसिकली इज नेवल, राइट। तो यस, इजराइल ने सी डोम भी किया है, तो वो भी लिख दीजिएगा, सी फॉर कैट एंड डोम, राइट। तो सी डोम भी किया उन्होंने, बट दैट इज फॉर आपके जो नेवी है, राइट। तो उनकी जो नेवल स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करने के लिए, तो नेवल कैपेसिटी है उनकी डिफेंस पर्पसेस के लिए, वहां पे शिप्स में या एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इट विल बी डिप्लॉयड सी डोम, राइट। सो टू मेक श्योर दैट नोबडी destroys their vessels. Now this basically is a laser missile system. अब ये क्या करेगा जी, लेजर बीम फेंकेगा और हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जी इजराइल। तो Israel is definitely leaps and bounds ahead of all the other countries. Iron beam is the name. Please write it down. Israel की ये टेक्नोलॉजी जो है, जिससे लेजर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, उसे हम आयरन बीम कहते हैं। और जो हमने डिस्कस करी सी डोम रिलेटेड टू मरीन एक्वेटिक, और हमने डिस्कस किया एरो। एरो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज एरियल, राइट, दैट इज एरियल। चलिए, आयरन बीम हमने कर लिया। तो आयरन बीम क्या है? लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। चलिए जी, इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम, जो कि लेजर को यूज करके जो रॉकेट्स, मोर्टार्स और कुछ भी होगा उन सभी को जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये भाई पहली बार है ऐसा कुछ कर रहा है, और 90% एक्यूरेसी है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। The Indian Air Force has successfully test fired BrahMos missile from you can see here our MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आप यहाँ देख सकते हो, जो हमने पाकिस्तान पे फेंकी उसकी बात नहीं हो रही है वो ठीक है, ये दूसरी है, ठीक है। पाकिस्तान में मिसफायर हुई थी, आप सभी को पता है। द मिसाइल हिट अ डीकमीशन्ड इंडियन नेवी शिप अंडर क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन नेवी, टेस्ट फायर, राइट। सो सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया to gauge the capabilities. The BrahMos missile can be fired from submarines, from ships, from fighter jets and also from land. तो तीनों की capabilities है, इसीलिए तो फिलीपींस भी खरीदने को तैयार है। In 2016, the government decided to integrate the BrahMos into you can see 40 Sukhoi fighter jets. हमारे जो Sukhoi jets है, उन 40 Sukhoi jets में ये capabilities लगा दी जाएगी। Chief of Air Staff, you all know, विवेक राम चौधरी। India has launched 6th Scorpene class submarine INS Wagshir in Mumbai. So do write it down as it is. The headline is to be written here. That is it. तो जल्दी से आप लिख सकते हैं। हमारी नेवी फ्लीट को ये अच्छा एक सपोर्ट मिल गया डेफिनेटली, राइट। तो दिस वाज डेवलप्ड इन मुंबई। नाउ सबमरीन्स देख सकते हैं आप हमारी, तो INS कलवरी इज देयर, खंडेरी इज देयर, करंज, वेला, वगीर, और अब देख सकते हो वागशीर, राइट, द लेटेस्ट एडिशन। Russia successfully test fired thus you can see here the Sarmat intercontinental ballistic missile. Intercontinental मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे कैपेबिलिटी रखेगा। यूरोप से एशिया फेंकना है या फिर अमेरिका फेंकना है, तो वो भी बेसिकली पॉसिबल रहेगा रशिया के लिए। सो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल करती है, दे हैव बेसिकली लॉन्च्ड दिस। सो डू राइट इट डाउन एज वेल।
ठीक है जी, नाम लिख लीजिएगा फटाफट से। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बहुत ही मतलब केपेबल है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग देयर ओन मिसाइल्स। उनका जो डिफेंस सिस्टम है बहुत जबरदस्त है। आज की डेट में वो आपको पता ही है, अलग थलग है, पर फिर भी दे आर नॉट बजिंग, राइट, द वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन। चलिए, now, about this, you can see here reported to carry 10 or more warheads at one time. The capability is to travel 11,000 to 18,000 kilometers. आप समझ ही सकते हो, 11,000 किलोमीटर अगर चल सकती है तो कहां से कहां फेंक देगी वो। First Russian missile which can carry smaller hypersonic boost glide vehicles. तो बहुत लंबे दूरी पे अगर निशाना अगर चलाना है तो that is also possible using these. चलिए, नाउ सम स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज गाइस, फटाफट से करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले ड्वेन ब्रावो बिकम्स हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईपीएल हिस्ट्री। ही हैज ओवरटेकन Lasith Malinga. We all know that the IPL finals are scheduled for tomorrow. देखते हैं कौन जीता है. Just the winner is important for us, right? And the name of the two new teams, of course. One of them has reached the finals. What is the name of the team? Do share in the comments. चलिए, Bravo total wickets are 171 and he's still playing. Lasith Malinga, as we all know, has already retired. Chaliye. Total number of teams in IPL are 10. Two latest teams. One is Lucknow Super Giants and the other one is Gujarat. अरे गुजरात कौन सी? अरे जीटी, बिल्कुल गुजरात टाइटंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, Gujarat Titans is the correct answer. When we talk about IPL, basically BCCI started this in the year 2008, right? 2007 में conceptualize हुआ आइडिया, 2008 में पहला IPL हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं करंट चैंपियन जी, पहला चैंपियन जो था वो कौन था? वो पहला चैंपियन जो थे वो थे राजस्थान रॉयल्स। करंट चैंपियन जो है देख सकते हो आप, मतलब करंट मतलब लास्ट चैंपियन, कल जो है नए चैंपियन बन जाएंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2021 के, राइट, टिल आज, व्हाट इज द डेट टुडे? 28 मई। ठीक है, टिल एज ऑफ 28 मई 2022। ठीक है, 29th में आईपीएल फाइनल होगा, तो उसका करंट विनर आप देख लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है पूरा मैच देखो आप, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू keep a track on which team has actually won. Most runs have been scored by Virat Kohli from Royal Challengers Bangalore. Most successful team is Mumbai Indians. Most wickets, Dwayne Bravo. This year, most wickets अभी चल रहा है, युजवेंद्र चाहल is likely to be the highest wicket taker. ऑस्ट्रेलिया क्लिंच्ड आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 टाइटल। अब देख सकते हो आप, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप जो है वो जीत गई, इंग्लैंड को बड़ी आसानी से हरा दिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दैट इज इट, राइट। ऑस्ट्रेलियन विमेंस वर्ल्ड कप वाज कंडक्टेड एंड player of the match in the finals was Elisa Healy. Player of the tournament again was Elisa Healy. Now do remember her, क्योंकि अगर हम इनकी बात करेंगे तो मतलब हर हस्बैंड बेसिकली इज मिचेल स्टार्क, तो मिचेल स्टार्क भी बहुत ही रिनाउंड क्रिकेटर है। मोस्ट रन्स ऑल टाइम डेबी हॉकली फ्रॉम न्यूजीलैंड। इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, हमें बहुत उम्मीदें थी, बट anyways, most wickets all time by an Indian, Julian Goswami, 45. And also when we're talking about women World Cup, so most number of you can say representations by a woman cricketer is by Mithali Raj. Mithali Raj has represented India at 6 World Cups. 6 World Cups, just imagine, 6 World Cup में has represented India, right? So the only athlete or only cricketer to have achieved this feat in women's cricket. In men's cricket there are 2 other cricketers. जल्दी से उनका नाम बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। Let's see who shares this the quickest. Meanwhile, Qatar FIFA 2022 unveiled Laib as a mascot. तो अब देख सकते हैं आप, mascot है Laib, definitely worth remembering, very important for us. FIFA आपको पता है ये कतर में हो रहा है। दिस द फर्स्ट फीफा इन द मिडिल ईस्ट एंड द अरब वर्ल्ड।
फीफा का मैस्केट आपसे हर बार पूछते हैं जब भी एग्जाम होता है, तो आपको याद रखिएगा लाइब इज द आंसर. लाइब बेसिकली मीन्स व्हाट? इट बेसिकली मीन्स अ सुपर स्किल्ड player. Also, to note, BYJU'S has become the first Indian sponsor of the FIFA World Cup. So, worth remembering as well. I'm sure this is much easier to remember than other news. Chaliye. All right. So, congratulations to all of you. FIFA 2022 official match ball is named as Al Rela, created by Adidas. FIFA 2026 will be hosted, the next FIFA World Cup will be hosted by US, Mexico and Canada combined. FIFA current president is Gianni Infantino. Headquarter there at Switzerland in Zurich. Next, Meghalaya has hosted the 83rd National Table Tennis Championship 2022. It started on the 18th of April. याद रखिएगा, ठीक है जी. चलिए, तो अब इसमें जो भी जीते उसका नाम आप याद रखिएगा. कैपिटल इज शिलोंग, मेघालय की बात कर रहे हैं. चीफ मिनिस्टर इज कॉनराड कोंकल संगमा. गवर्नर सत्यपाल मलिक. और वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में लिविंग ब्रिज इज देयर, ठीक है, शामिल है, याद रखिएगा. 2022 ऑल्सो नोन एज जिंकिंग रिस इन मेघालय, राइट, इस नाम से जाना जाता है वहां पे लोकल. कार्लोस एल्करज हैज बिकम द यंगेस्ट चैंपियन ऑफ मियामी ओपन. चलिए जी. सचिन तेंदुलकर तो आप लोगों ने सही लिखा बेटा, दूसरा नाम जो है वो सही नहीं लिखा आपने, तो वो मैं आपको बता देता हूं. सचिन तेंदुलकर एंड वन फ्रॉम पाकिस्तान. द वन फ्रॉम पाकिस्तान इज जावेद मियांदाद. तो लिख लीजिए, जिसको नहीं पता था प्लीज राइट इट डाउन. जावेद मियांदाद एंड सचिन तेंदुलकर, राइट. जावेद मियांदाद एंड सचिन तेंदुलकर, द अदर टू क्रिकेटर्स हु हैव अचीव्ड दिस फीट, ठीक है, ऑफ प्लेइंग रिप्रेजेंटिंग 6 टाइम्स, ठीक है, 6 बार टू रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री इन क्रिकेट वर्ल्ड कप. चलिए, मीनवाइल नेक्स्ट प्लीज राइट डाउन. कार्लोस एल्करज बिकम्स द यंगेस्ट चैंपियन ऑफ मियामी ओपन, ठीक है. मियामी ओपन के विनर हैं, 18 साल के हैं ये, याद रखिएगा. दैट इज इट, ठीक है जी. चलिए, ऑलराइट. नेक्स्ट, Veera is the official mascot of the second Khelo India University Games. देख सकते हो, Thawarchand Gehlot, Governor of Karnataka, launched the official mascot and logo of the Khelo India University Games in the presence of Anurag Singh Thakur, Sports Minister. So do remember this. Veera is the official mascot. You can see here in this picture, it is depicted clearly. Right? तो जल्दी से देख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए. ऑलराइट, आई थिंक लिख लिया सबने. चलिए, मैस्केट होता क्या है? मैस्केट बेसिकली इज अ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. आपका जैसे हर टूर्नामेंट का एक मैस्केट होता है कि मतलब गुड लक चार्म कह लो आप, है ना, एक सिंबल, एक ग्राफिकल सिंबल, ठीक है, टू रिमेम्बर, राइट. अब यहाँ पे आप किसी को भी आप वीरा बना सकते हो, जैसे यहाँ पे बना दिया, है ना, तो ये बस सिंबल है, ठीक है. चलिए, डन है. लकी चार्म कह लो आप. ऑलराइट, डन है दोस्तों. चलिए, अब इसमें देख सकते हो आप, काफी लोग आए थे, गाना वाना गाया था, कन्नड़ रैपर भी आए थे. होस्ट किसने किया? तो कर्नाटका ने किया. और पहला एडिशन जो था इट वाज होस्टेड बाय ओडिशा, दिस टाइम कर्नाटका. नेक्स्ट, यूनेस्को फंड जो है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैव डोनेटेड और रिलीज्ड $72,124 टू एलिमिनेट डोपिंग इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. आपको पता है डोपिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम. व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज बेसिकली टू consume performance enhancement substitutes which are basically banned, right. तो ऐसी प्रोडक्ट्स अगर आप लेंगे तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी. तो ये देख सकते हैं आप, $72,124 इतना डोनेट किया है हमने यहाँ पे. अब अनफेयर एडवांटेज ना मिले किसी भी प्लेयर को, इस वजह से. रशिया आपको पता ही है इंस्टीट्यूशनल डोपिंग का दोषी है, इस वजह से उसको ओलंपिक्स ने बैन किया हुआ है, उसको जितनी मेजॉरिटी स्पोर्ट्स बॉडीज ने बैन किया हुआ है, बिकॉज रशिया के जो एथलीट्स हैं उन पे इस तरह के आरोप लगे हुए हैं. चलिए, इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड लॉट्स ऑफ फंड टुवर्ड्स यूनेस्को, ठीक है. चलिए, this fund started in the year 2008. Next, Charles Leclerc has won Formula 1 Australian Grand Prix 2022. Just write the title, that's about it, right. चलिए,
ऑल राइट, इसके अलावा अदर ग्रैंड प्री, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री के विनर हैं जी मैक्स वर्स्टैपन, लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड के विनर भी हैं ये, और चार्ल्स लेसरैक का F1 बहरेन ग्रैंड प्री के विनर। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट देख सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ 15 इंडियन बॉक्सर्स वन अस लॉट्स ऑफ मेडल्स, राइट। तो 10 मेडल लेकर आए, 3 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज एट द थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग। तो आप देख सकते हो गोल्ड कौन कौन लेकर आए हमारे लिए, तो गोविंद सहानी, अनंत प्रहलाद चोपड़े, सुमित एज वेल, राइट। सो डू रिमेंबर द गोल्डन बॉयज या, राइट। सिल्वर बॉयज अमित पंगाल, मोनिका, वरिंदर सिंह, आशीष कुमार, एंड ब्रॉन्ज मनीषा, पूजा एंड Bhagyavati. Do remember this, right? Their weight categories is mentioned as well. Next, the Player of the Month awards. Now, Player of the Month is basically, it changes every month. So your job is to remember the recent ones. That is all, right? So Babar Azam, Rachel, Haynes, they have been awarded for the month of March. Usually, आपसे month के नहीं पूछेंगे, Player of the Year is much more important, right? ICC Chairman is Greg Barclay, CEO is Geoff Alardis, right? So do remember this as well. Netherlands has crowned, you can see here, crowns FIH Junior Women's Hockey World Cup 2022 champion. Netherlands जीत गए हैं जी Junior Women's Hockey World Cup. That is it, right? ये याद रखिएगा। चलिए, again you can see here Russia was banned here, but this time not because of allegations of doping, but because of their invasion of Ukraine. The Hockey Federation actually banned them, right? तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, Rohit Sharma has become the second Indian player to score 10,000 runs in T20 internationals. 2020 के मैचेस होते हैं, उनमें सेकंड इंटरनेशनल बैट्समैन बन गए हैं जी इंडिया के, राइट। अगर हम बात करें रोहित शर्मा के अलावा तो दूसरे कौन है, तो वो है जी विराट कोहली, राइट। यानी कि फर्स्ट प्लेयर जिसने 10,000 बनाए थे T20 में वॉज विराट कोहली, सेकंड रोहित शर्मा। चलिए, in terms of runs scored in overall T20s, number 1 is Chris Gayle, right, with 14,562 runs, followed by Pakistan's Shoaib Malik, followed by Kieron Pollard, Aaron Finch, Virat Kohli, David Warner, right. All of them are there in the 10,000 runs club. Now, Rohit Sharma has also joined them. All right, Australia's Victoria City there in Australia will host the 2026 Commonwealth Games. Very important, write it down immediately. लिख लीजिए फटाफट से, this is very important for us. चलिए जी, डन है। बढ़ते हैं आगे, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड आपको बताइए, MCG is the biggest stadium there in Australia, the second largest in the world. The largest stadium is there in India. What is the name of the stadium? जल्दी से बताइएगा। The largest stadium in the world in terms of capacity of crowd. Cricket stadium सबसे largest दुनिया का कहाँ पे है? Let's see if you know the answer to this. चलिए, सभी को पता है, IPL फाइनल भी वही होगा। क्या नाम है जी? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बिल्कुल। तो ये याद रखना है जी आपको, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दिस वाज प्रीवियसली नोन एज प्रीवियसली नोन एज मोटेरा, राइट। और मोटेरा नाम था इसका पहले। इसके अलावा द थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन जयपुर, ठीक है। तो जयपुर में भी एक बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। वेरी गुड नवनीत, किंजा, नव्या, राम, ऋषभ, अमित, वेल डन भाई। थॉर भी हमारे बीच में, क्या बात है। मानस, कनक, अश्मिता, हरिओम, वेल डन। सुयश, ध्रुव, वेल डन। मोटेरा पहला नाम था, बिल्कुल। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्टेड इन इंडिया, दैट इज अबाउट इट। बस इतना ही, इंडिया में होस्ट हुआ ये, इतना आपको याद रखना है, दैट इज इट। चलिए, in 2023 India will host the 2023 cricket world cup. Apart from this you can see the other events that India will be hosting, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट, Haryana wins 12th senior hockey national championship. That is all, right? Who's the winner? That is all they'll be asking, apart from where it was hosted. So it was hosted by Bhopal, or rather conducted in Bhopal, ठीक है जी। तो ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अप्रैल में ही कंडक्ट हुआ भोपाल में, मध्य प्रदेश, एंड द विनर इज हरियाणा। चलिए,
All right, third कौन आया, fourth कौन आया, not important for us. Rohit Sharma and Jasprit Bumrah, very important. The two cricketers from the Indian team who have been added to the Wisden's 5 Cricketer of the Year. What is the name? तो आपको चार ऑप्शन दे सकते हैं. रोहित शर्मा विराट कोहली जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत एंड भुवनेश्वर कुमार. तो पता होना चाहिए हमें क्या है द करेक्ट आंसर. इट इज रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह. Right, other three: Ollie Robinson from England, South African women's player, then you can see here Van Niekerk, Devin Conway from New Zealand is also there among them. Chaliye ji. Leading cricketer in the world has been awarded to Joe Root. Leading women cricketer, you can see here Leslie Lee from South Africa. Leading T20 cricketer, Mohammad Rizwan from Pakistan. Next, two women won bronze in Asian Women Championship 2022. तो आप ये नाम लिख दीजिए दोनों के, सरिता मोर एंड सुष्मिता शौकीन. दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जी. सुष्मिता शौकीन, याद रखिएगा नाम. All right. Next, Andre Rublev has won the Serbian Open title. Just the name, the title winner's name is all that is important. He has successfully defeated Novak Djokovic to win this prestigious title, right? In a tie break, that is, right? To defeat him is a big deal. All right. This year, along with along with Rafael Nadal, he has actually won four prestigious titles in tennis, of course. India has won gold medal in archery World Cup stage 1. Please write it down ASAP. Jaldi se likhiye. Where was this hosted or conducted? The answer is Antalya in Turkey. So in Turkey this was hosted and India won the gold medal in archery World Cup. India's Tarundeep Rai and Riddhi have basically defeated in the mixed team gold medal, and Indian trio of Abhishek Verma, Rajat Chauhan and Aman Saini defeated French team to clinch the gold as well. चलिए, Indian wrestler won gold in Asian Wrestling Championship. तो आप यहाँ देख सकते हो काफी सारे मेडल लिए हमने. गोल्ड लिया जी रवि दहिया जी ने, सिल्वर बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, ठीक है जी. इसके अलावा देखिए आप ब्रॉन्ज लिया नवीन, विकी, सत्यव्रत, राइट. तो अलग अलग विनर्स हैं, आप इनका नाम याद रखिएगा. Now let's move on quickly to the awards. Lots of things are to be discussed, guys. जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चंस भी कर रहे हैं यार हमें. चलिए, we are received a 64th Grammy album of the year. Again very important, please do write it. Album of the year पूछ सकते हैं आपसे, किसने किया ये भी पूछ सकते हैं, तो लिखिएगा. We Are by John Batista. Leave the Door Open by Silk Sonic is the record of the year. Song of the year again goes to Leave the Door Open. Do remember all these categories. Apart from this, new artist Olivia Rodrigo. Best global music performance, you can see here Mohabbat by Arooj Aftab. First Pakistani to win this, so becomes important for us. Do write it down as well. Best global music album, Mother Nature by Angelic. All right. Next, Chameli Devi Jain Award won by journalist Arifa Johari, right? So it's a prestigious award for journalism. So she basically is a worker, or rather a journalist from who's working there with Scroll.in for the last 8 years, and she has been awarded the same. All right, move on. Let's move on to the next one. NASA climate research scientist has won the World Food Prize award. The name is Cynthia Rosen. You can write here Rosenwig, right? Cynthia Rosenwig is the correct answer. ठीक है जी, जल्दी से लिख दीजिएगा. World Food Prize winner Cynthia Rosenwig. ठीक है जी, कैश प्राइज मिला. रिसर्च साइंटिस्ट देयर एट नासा. चलिए. Next, Indian winners of the World Food Prize 1987 M.S. Swaminathan, Varghese Kurian in the year 1989, 1996 Gurdev Khush and B.R. Barwale in the year 1998. Apart from them, 2000 Surinder Vassal, you can see M.B. Gupta in the year 2005, 2014 Sanjay Rajaram and Ratan Lal in the year 2020. Next, Kamloops Residential School has been awarded the World Press Photo of the Year 2022. So do remember this as well. Kamloops Residential School, ये आप याद रखिएगा. आप पूछ सकते हैं फोटोग्राफर कौन था, तो Amber Bracken. Amber Bracken was the photographer. चलिए.
The photograph shows the death of children due to cruelty in British Columbia. तो आप देख सकते हो. चलिए, World Photography Day observed on 19th of August. Neelmani Fukan has been conferred with the 56th Gyanpith Award. Very important award this is. 57th Gyanpith Award is also very important. तो वो भी याद रखिएगा. You can write here. Damodar Mozo, chosen for his contribution to Indian literature. 57th and 56th both are important for us. दोनों याद रखने हमें. Neelmani Fukan and Damodar Mozo. चलिए, very important award this is. चलिए, next PM Modi honored with the Lata Dinanath Mangeshkar Award, right? A prestigious award in the initiated remembering Lata Mangeshkar ji, right? उनकी आप देख सकते हैं. The award ceremony was held on 24th April, which marks the 80th death anniversary of Master Dinanath Mangeshkar. ठीक है, लता मंगेशकर जी के father. चलिए, next, NMDC, that is the National Mineral Development Corporation, has won 2 awards at the 80th Coach Summit 2022. Theme क्या थी लिख लीजिएगा. State of BFSI and PSUs. State of BFSI and PSUs. चलिए जी, डन है. चलिए, डन. चलिए, ये भी लिख दीजिएगा बिल्कुल. एनएमडीसी के हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इट इज लोकेटेड देयर एट हैदराबाद. ठीक है जी, हैदराबाद. चलिए, चेयरमैन एंड एमडी सुमित देव. Mumbai has been recognized as the tree city of the world. Last year it was Hyderabad. In 2020, in 2021, Mumbai has been recognized as the tree city of the world. Please write it down. The United Nations Food and Agriculture Organization. पूछ सकते हैं आपसे FAO करता है, कौन करता है? आप लोग बोलोगे FAO थोड़ी करेगा, और पता चला वही करता है. तो यही अवार्ड दे रहा है ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर मेंटेनिंग अर्बन ट्रीज. है ना, काटना नहीं है भाई. हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है पेड़. और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से सेलिब्रेट करके फैला रहे हैं जी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ट्री प्लांटेशन में हेल्प करें. The CEO of Arbor Day Foundation is Dan देख सकते हो, Dan Lamb, and UNFAO Director General is Ku Dongyu. ठीक है जी, मस्त नाम है, देख सकते हो आप. UNFAO headquarter there at Rome. चलिए, awards. Falguni Nair has won the Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award 2021. ये आपको पता ही है जी. Falguni Nair is basically the founder and CEO of beauty brand Nykaa, right? Again, self-made billionaire. Udan scheme has been selected for award for excellence in public administration 2020. ये भी बिल्कुल आप याद रखिएगा. ठीक है, as it is, just write the headline. Very important for us. चलिए जी, जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा. चलिए, नेक्स्ट. सर डेविड एटनब्रो हैज बीन नेम्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021. तो देख सकते हैं आप, सर डेविड एटनब्रो हैज बीन नेम्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021. वेरी इंपॉर्टेंट वन. डू राइट इट इमीडिएटली. फटाफट से लिख दीजिए. सर स्क्रीनशॉट लेके थक गया. चलिए, हाँ, थोड़ा टायर्ड हो गए होंगे आप, काफी देर से लिख रहे हो. चलिए, कोई बात नहीं. थोड़ी ये पर इंपॉर्टेंट बहुत है. चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है, इनको नाम जरूर याद रखिएगा. किशोर दास हैज बीन सिलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड. ये भी आप जरूर लिख सकते हैं फटाफट से. डू राइट इट डाउन एज वेल. जल्दी लिख लीजिए. नाउ गाइज, आई एम श्योर अब आप लोगों ने काफी सारी चीजें लिख ली होगी. बिफोर आई क्वेश्चन कब आएंगे, बिल्कुल. तो बिफोर आई बेसिकली
स्टार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी क्वेश्चन शुरू कर ही देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है मैं चाहूंगा उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च जरूर करें आप, और जो भी करंट न्यूज है उससे रिलेटेड उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें पता होना डेफिनेटली चाहिए। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस क्विकली। फटाफट से चलते हैं, बढ़ते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स गो, ये रहे जी हमारे क्वेश्चंस। सो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। चलिए जी, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। चलिए, so the first question coming your way is this: who has been appointed as a new foreign secretary? जल्दी से बताइए, चार ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन बता पाएगा। चलिए जी, बहुत खूब बहुत खूब। द करेक्ट आंसर इज सी, इट इज विनय क्वात्रा। विनय क्वात्रा इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले सही जवाब दिया जी शिवम और नव्या ने, उसके बाद दिया जी ध्रुव ने भी, हरिओम, अस्मिता, श्वेता, आराध्या, अभिनव, अली, ओडिन, किंजा, आराध्या। वेल डन, वेल डन, वेल डन। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है जी। आफ्टर कार्विंग आउट 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स देयर इन आंध्र प्रदेश, अब कितने हो गए हैं? समथिंग व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। Pretty sure every one of you will get the correct answer to this one. The correct answer is yes, it is 26. बिल्कुल सही, 26। ये तो काफी इजी था, fairly easy one. I am sure ये तो मतलब अब तो आराम से आप बता पाओगे कि we have discussed this in the class as well. So well done शिवम, बहुत बढ़िया, बहुत खूब तबू, अभिनव, नव्या, well done कनक। चलिए, अमित, वेल डन, एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, विच वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज वन द टाइटल ऑफ विमेंस वर्ल्ड कप? कौन जीता भाई? सिंपल सी बात है, बताइए फटाफट से, कौन जीता विमेंस वर्ल्ड कप? ये टीम जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इट इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ अदर टीम्स। क्या है जी आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर फॉर दिस वन is yes, it is absolutely correct, it is ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया is the correct answer, विमेंस वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। चलिए जी, वेरी गुड, अश्मिता, श्वेता, वायलेट, मानस, इप्शिता, वेल डन अपर्णा, आराध्या, शाबाश। चलिए, the name of official mascot of Qatar FIFA 2022, again something which has been discussed. The correct answer is, it is Laib. C is the correct answer. Laib is the right one. Well done. Now this question, the next one is basically कि भाई GSI के डायरेक्टर जनरल कौन है? अब GSI के डायरेक्टर जनरल हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। लेट्स सी कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। वेरी गुड अश्मिता, सदफ, मानस, मनीषा, तबू, well done. Here the correct answer is Dr. S. Raju. Dr. S. Raju is the correct answer, the Director General of GSI. चलिए, बढ़ते हैं आगे। Which district has become the first district in India in which all ग्राम पंचायत have community libraries? ये सिटी जो है काफी फेमस हुई थी, इसके नाम से अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे एक वो भी आई थी, टीवी सीरीज भी आई थी। तो द करेक्ट आंसर इज, आप सभी को पता है, इट इज जमतारा, झारखंड। काफी बच्चों ने आप में से देखा भी होगा वो जो आई थी, एक सीरीज आई थी इसके ऊपर। खैर, अब मत देखने चले जाना कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ना ही कुछ खास है। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द सिप्री डेटा, द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच कंट्री हैज प्लेस्ड द सेकंड इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर? मिलिट्री एक्सपेंडिचर में सेकंड पोजीशन पे कौन सी है, ये पूछा गया है हमसे। दिस हैज बीन आस्क्ड टू अस। बताइए जी, क्या है आंसर या व्हाट इज द आंसर? द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज यस, इट इज चाइना। अब सेकंड पे चाइना जी, फर्स्ट पे कौन है? इंडिया और सऊदी अरेबिया। इंडिया, सऊदी अरेबिया फर्स्ट, ठीक है। तो देख सकते हो आप, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स और एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो भाई यूएस का आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। यूएसए एक्सपेंडिचर के मामले में नंबर 1 है ना, और इंपोर्ट के मामले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, ये याद रखिएगा। चलिए, बढ़ते आगे। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट, विच इंडियन पर्सनालिटी हैज रिप्लेस्ड वॉरेन बफेट एज
द फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट को पछाड़ के आगे निकल गए हैं गौतम अडानी। बिल्कुल सही कहा, ए इज द करेक्ट आंसर। सो वेल डन, गुड जॉब, बहुत बढ़िया जी। ध्रुव वेल डन वेल डन वेल डन। नवनीत, अली, Abhinav, Shikhar, yes, Adani is absolutely the correct answer. Ninth question, who has won Formula One Emilia Roman Grand Prix? So the answer is the winner of the Laureus Sports Award, that is Max Verstappen. Max Verstappen is the correct answer. चलिए जी, तो well done, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सही जवाब दिया बहुत खूब, well done well done well done, good job, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। चलिए जी, डन है। Next, 10th question, the last question that we have today. Who is the head of advisory committee on market data, which is recently reconstituted by SEBI? SEBI की बताइए जरा, advisory committee on market data, इसके हेड कौन है? The answer is, it is MS Sahu. MS Sahu is the correct answer. So well done. 10 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों आप सभी के। कितने मार्क्स आए आपके इन 10 क्वेश्चंस में? फटाफट से मेरे साथ शेयर कर दीजिए। क्विकली शेयर दिस विद मी। हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड अबव, लेट्स से, भाई 10 के ऊपर तो आने ही चाहिए थे, तो किस किस के आए हैं ये फटाफट से शेयर कर दीजिए। चलिए, मीनवाइल व्हाट आर द थिंग्स, 7 से ऊपर, मतलब 7 से ऊपर किस किस के आए आप में से, वो एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए, बाकी सभी शेयर कीजिएगा अपना स्कोर तो, पर 7 तो आने ही चाहिए मिनिमम। 10 सबने 10, अरे वाह, 8 आया, 10 भी आया, 1 भी आया है, अरे ऐसे कैसे। चलिए, चलो जी, कोई बात नहीं, और मेहनत करनी है भाई अगली बार, है ना। चलिए, तो गाइस, things that we have discussed today, we discussed lots of national news, international news, science tech, sports, awards, etc. काफी सारी चीजें हमने आज डिस्कस की है। कुछ चीजें जो हमारी रह गई है, कुछ क्वेश्चंस भी रह गए हैं, वो हम जो है विल कंटिन्यू देम इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अगली क्लास में हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। इन दिस सीरीज गाइज आप देख सकते हो काफी सारे सेशंस यहाँ पे लाइंड अप हैं आप लोगों के लिए, तो और भी सेशंस आएंगे। कल भी आपके लिए एक सेशन है 29 मई, दैट इज संडे को, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन आएगा। उसके लिए अगर आप तैयार नहीं है तो वही फटाफट से तैयार हो जाएं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो जो है आप मिस ना करें। इसके अलावा डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस फॉर द लाइव एनालिसिस ऑफ द क्लैट एंड एलिट एग्जाम दैट विल बी कंडक्टिंग ऑन 19th June and 26th of June. अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लीजिएगा। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, द हैंडल इज गिवन देयर। लाइक अस ऑन फेसबुक, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो डाउनलोड आवर app as well. It is available on the Google Play Store. ठीक है जी दोस्तों, तो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास का दी एंड। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, अच्छा स्कोर लाए हैं आप सारे भाई, 8 से नीचे मेरे को दिखा नहीं कोई भी। वेल डन एवरीवन, बहुत खूब बहुत खूब। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा। मजा आया आज एक मैराथन सेशन करके आप लोगों के साथ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।